Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rawpil BBA College Vapi, and I'm going to teach you elements of strategic management subject. Now, in our earlier session, we discussed the process of strategic management, that is, establishing strategic intent, environmental analysis, organizational analysis, setting long-term objective, identification of strategic alternative, choice of strategy, implementation of strategy, strategic evaluation and control, and then feedback. Now, in this session, we discuss implication of strategic management as a process. So, first of all, what is implication? Implication means what it implies. So in this session, we have to discuss what the strategic management process imply. वो क्या suggest करता है, वो क्या imply करता है. So question is implication of strategic management as a process. So strategic management process imply mainly four things. That is sequential nature, second interrelated, third feedback is necessary, and fourth is dynamic system. So first is sequential nature. That is, all the element of the process can be thought of in a sequential nature. So it implies that each step must be undertaken in a sequence. That is, formulation of strategy, then after implementation of strategy, and then after evaluation and control. Thus, this becomes a continuous process. Means what? पहले first formulation of strategy होता है and then after implementation of strategy होगा. So each step must be performed in a sequence, that is each step must be performed in a step by step. That is called as sequential nature. Clear? Second is interrelated. Now, the various element of the process are interrelated. Interrelated तो आपको पता है एक दूसरे के ऊपर related है. So, various element of the process are interrelated. Now, interrelated suggests that effect of each factor on others. Thus, there may be two-way impact of a factor, that is, each affecting others and in turn being affected by others. That is, formulation of strategy affecting implementation of strategy, and formulation of strategy is affected by setting long term objective. Okay, so हम लोग ने प्रोसेस पढ़ा, that is setting long term objective, then after formulation and then after implementation. So formulation of strategy किसको affect करेगा? Implementation of strategy को. And फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी किस फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी को कौन अफेक्ट करेगा? दैट इज सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. सो हर एक एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर रिलेटेड. क्लियर? थर्ड इज फीडबैक इज नेसेसरी. नाउ फीडबैक इज नेसेसरी टू रिलेट implementation of strategy with the early stage element of the process. ओके, यानी फीडबैक से क्या आपको फीडबैक क्यों जरूरी है? आपको रिलेट करना है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी विद द अर्ली स्टेज एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस. सो फीडबैक कैन बी टेकन एज अ इनपुट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फ्यूचर डिसीजन मेकिंग. मीन्स फीडबैक से आपको पता चलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ या नहीं, फॉर्मुलेशन प्रॉपर हुआ या नहीं. दैट इज वाई फीडबैक इज नेसेसरी. नाउ it should be noted that feedback cannot be taken as element of the strategic management process, but it is an essential as any other element, because feedback से ultimately आपको पता चलता है कि objective अचीव हुआ या नहीं हुआ. That is why in strategic management process feedback is necessary. Clear? Next is last, dynamic system. Now strategic management can be termed as a dynamic system. Now what is dynamic? We all know that.
Dynamic means what? Constantly changing nature of condition. Now we know that the organization has to operate or functions in an environment, and environmental factors such as society's need, government policy, technological factors, cultural factor is what dynamic and constantly changing. Thus, various elements and the activities of strategic management have to be adjusted accordingly. मीन्स व्हाट? जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज आएगा, एलिमेंट्स और द एक्टिविटीज ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो भी एडजस्ट होनी चाहिए. दैट इज वाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज व्हाट? डायनेमिक सिस्टम. बिकॉज हमको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कहाँ पे होता है, फंक्शनिंग कहाँ पे करता है? एनवायरमेंट में. और जो भी एनवायरमेंटल के जो भी फैक्टर्स है वो डायनेमिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है. That is why every element and the activities of the strategic management process have to be adjusted according to the change in the environment. So example, ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया. ग्रोथ अचीव करने के लिए वेरियस अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किया था ऑर्गेनाइजेशन ने. दैट इज मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर एक्सेट्रा. बट गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया. दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हुआ, दैट इज गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल ग्रोथ ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकती है. ओके, सो एक्सटर्नल ग्रोथ ऑप्शन कौन सा है? मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर एक्सेट्रा. सो ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करेगा? नया अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करेगा. दैट इज डाइवर्सिफिकेशन कर दो, कॉन्सेंट्रिक एक्सपांशन कर दो. दैट इज व्हाट? इंटरनल ग्रोथ ऑप्शन. सो जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होगा तो वेरियस एक्टिविटीज और द एलिमेंट भी चेंज होना चाहिए. दैट इज वाई strategic management process can be termed as what? Dynamic system. Clear? So this is strategic management, implication of strategic management as a process. Clear? Now in next session I will send the notes of the process of strategic management. Okay, and in this session B part, that is part B chapter over हो चुका है. So in next session we will start chapter 1 part C, that is strategic intent, and it consists of vision, mission and objective. Okay, thank you.